Okay. So we spoke about temperate grasslands in the last class. Okay. Now, continuing our discussion on temperate grasslands. Okay. See, equator passes here. Okay. So we have prairies. We have pampas. यहाँ पे है वेल्ड. यहाँ पे है डाउन्स. राइट. एंड यहाँ पे स्टेपीज और पुश्तैक्स. अब देखिए, when we talk about the temperate grasslands of northern hemisphere, they record a summer temperature of 15 to 20 degrees centigrade and a winter temperature of -10 to -20 degrees centigrade. When we talk about southern hemisphere, we are talking about a summer temperature of 20 to 25 degrees centigrade and a winter of 5 degrees centigrade to 10 degrees centigrade. Okay. So there is a slight difference on which we will discuss now. Okay. So what we see here is that the extremes of temperatures are only found in the northern hemisphere. These are extreme temperatures. And in the southern, yes. हाँ बोलो प्रताप, पढ़ाने तो दो मुझे. हाँ टेम्परेट ग्रासलैंड्स मैं कह रहा हूँ, पढ़ाने तो दो. हाँ टेम्परेट ग्रासलैंड्स, हाँ शुरू में कहा ही था ना. टेम्परेट ग्रासलैंड्स ही तो है ना, प्रेरीज, पैम्पर्स, वेल्ड, डाउन्स, स्टेपीज, पुश्तैज. So extreme temperatures are found in northern hemisphere, and what we see here is in the southern hemisphere, what we see that winters, especially winters, are above 0 degree centigrade. And apart from that, summers are slightly warmer. Summers क्या है? They are slightly warmer, right? Summers are slightly warmer. ये मैंने लिखा है यहाँ पे green color में. In the case of southern hemispheric temperate grasslands, and winters are above 0 degree centigrade. But what is happening in the northern hemisphere? Summers are little less warmer. They are at 15 to 20 degrees centigrade, and winters are sub-zero.
right? -10 to -20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो विंटर्स सब जीरो है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में और सदर्न हेमिस्फेयर में विंटर्स आर अबव 0 डिग्री सेंटीग्रेड। कारण, व्हाट इज द रीजन? जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यस, रीजन इज टेपरिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द सदर्न हेमिस्फेयर, and because of that tapering, what happens is oceanic influence increases, and because oceanic influence increases, the winters become above zero. They are not freezing because oceanic influence is higher. But in the northern hemisphere, we see as the latitudes increase, what we notice is the region of temperate grasslands, it gets away from oceanic coastline, and more are the grasslands away from oceanic coastline, right? More are the grasslands away from the oceanic coastline, less is the impact of the oceans, less is the impact of the oceans. And जितना oceans का impact कम होगा, उतना हमको particularly in winters we will face and experience sub-zero temperatures. Will face sub-zero temperatures. और अगर आप annual range को भी यहाँ calculate करेंगे, तो annual range जो है आपका high मिलेगा कहाँ पे? नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में। सो हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 30 डिग्री सेंटीग्रेड टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड के एनुअल रेंज की बात कर रहे हैं, राइट? जो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, 30 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड की एनुअल रेंज है, और वही एनुअल रेंज हमारी कम है कहाँ पे? सदर्न हेमिस्फेयर में इट इज ओनली अबाउट 15 to 20 degree centigrade at the max. And what is annual range of temperature? It is the difference between summers and winters. तो summers and winters का difference 30 to 40 degree centigrade है northern hemisphere में, और वही difference है 15 to 20 degree centigrade in the southern hemisphere. Please write down. इसको पहले बना लो, फिर हम लिखेंगे, ठीक है? Summer temperature, northern hemisphere 15 to 20 degree centigrade. Winter temperatures, northern hemisphere -10 to -20. It is freezing cold. And when we compare them to the southern hemispheric temperate grasslands, we are talking about ice-free winters. Winters are snow-free or ice-free. Sir, sir, tempering of the chemical. Tapering. Yes. तुम बताओ क्या है टेपरिंग? ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने। व्हाट इज टेपरिंग? दूसरा कोई स्टूडेंट बताओ जिसको पता है। It is getting narrower, right? It's like the side is Reducing. side is getting reduced. वेरी गुड। तो टेपरिंग मतलब लक्ष्मी की साइज जो है, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, वो लैटिट्यूड के साथ कम होता जाता है ना? ठीक है ना? तो साउथ अमेरिका में भी वही हो रहा है, अफ्रीका में भी वही हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में वही हो रहा है। तो टेपरिंग होने से क्या होता है? ओशियानिक इन्फ्लुएंस इंक्रीज होता है। और अभी हम देखेंगे कि ये जो टेम्परेचर वेरिएशन है, इसकी वजह से वहां के एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पे क्या इंपैक्ट पड़ता है। ओके, आप ये डायग्राम बना लीजिए, फिर हम इसका लिखेंगे। बन गया डायग्राम? Yes.
Please write down. सबका हो गया? प्रताप डन? बाकी कौसर? Yes, sir. लिखिए due to increase in geographical area of the continents, due to increase in geographical area of the continents in the northern hemisphere with latitudes, in the northern hemisphere with latitudes in the northern hemisphere with latitudes, comma, the oceanic influence reduces, oceanic influence reduces, which results into into higher annual range of temperature, higher annual range of temperature, higher annual range of temperature, full stop. Summers are mild at 15 to 20 degrees centigrade. Summers are mild at 15 to 20 degrees centigrade, while winters are extremely cold. Winters are extremely cold in the range of minus 10 degrees centigrade to minus 20 degrees centigrade. In the range of minus 10 degrees centigrade to minus 20 degrees centigrade. Full stop. Extremely frozen winters with lowest temperatures, extremely frozen winters with lowest temperatures is found in the middle of the continents, far away from the coastline, far away from the coastline. Far away from the coastline. Full stop. At the periphery, spelling is on the board. At the periphery of the temperate grasslands of northern hemisphere, at the periphery of the temperate grasslands of the northern hemisphere,
at the periphery of the temperate grasslands of the northern hemisphere. Winters become slightly less colder. Winters become slightly less colder compared to compared to compared to which is experienced compared to which is experienced in the middle of the continents compared to which is experienced in the middle of the continents. Full stop. Peripheral regions of these grasslands, peripheral regions of these grasslands are closer to the oceanic coastline, are closer to the oceanic coastline compared to compared to the middle of the continent compared to the middle of the continent compared to the middle of the continents. Full stop. Prairies, steppes, and pushtas. Prairies, comma, steppes, and pushtas. Prairies, comma, steppes, and pushtas of the northern hemisphere of the northern hemisphere in USA, comma, Canada, in USA, comma, Canada, comma, comma, Russia, comma, Ukraine, and Hungary, and Hungary. Remains snow covered, remains snow covered from remains snow covered from November to February. Remain snow covered from November to February. With sub-zero temperatures. With sub-zero temperatures. Sub-zero temperatures. Full stop. During summers, during summers, during summers, comma, the relative humidity in these grasslands, the relative humidity in these grasslands is lesser
in these grasslands is lesser, comma, comma, the middle of the continents, the middle of the continents are extremely dry, extremely dry compared to the peripheral regions of these grasslands compared to peripheral regions of these grasslands which remain closer to the oceanic coastline, which remain closer to the oceanic coastline compared to middle of the continents, compared to middle of the continents. ये पॉइंट सबको समझ में आया ना? बताइए, ये जो लिखा आपने अभी, ये प्रेरीज है, ठीक है? यहां पे कोस्टलाइन है दोनों तरफ. हम ये कह रहे थे कि ये जो मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट्स होते हैं ना, इनमें जो समर है that is extremely dry because they are away from the coastline, और जो विंटर है it is extremely cold because compared to both the coastlines, with respect to both the coastlines, they are farthest. क्या farthest है? The middle of the continents. तो यहाँ पे समर भी ड्राई होगी, विंटर्स भी एक्सट्रीमली कोल्ड होंगे, क्योंकि जितना ओशियन के पास होता है उतना ओशियनिक इन्फ्लुएंस से माइल्ड हो जाता है टेम्परेचर, और जितना दूर होता है ओशन से उतना रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम होती है एयर में. तो इसलिए हमने लिखा है अभी अभी समर्स आर एक्सट्रीमली ड्राई और विंटर्स भी क्या होते हैं? एक्सट्रीमली कोल्ड. समझ में आया अभी? यस, ड्यू टू लेस रेनफॉल. एंड ये जो हमारे वेस्टर्लीज ब्लो करते हैं ना इस रीजन में, वो भी कोस्टलाइन से दूर हो जाते हैं इतना कि वो मॉइस्चर कंटेंट उनमें मिनिमम हो जाता है.
लेकिन जो पेरिफेरल रीजन्स हैं, मतलब जो बाउंड्रीज हैं, ये वाली जो बाउंड्रीज हैं वो ओशियानिक कोस्टलाइन से बहुत दूर नहीं है। तो बाउंड्रीज पे हमने क्या बोला, बाउंड्रीज पे क्या है कि समर में रिलेटिव ह्यूमिडिटी थोड़ी सी हाई रहेगी कंपेयर टू मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, और विंटर्स क्या होंगे, स्लाइटली लेस कोल्डर। विंटर्स क्या होंगे, स्लाइटली लेस कोल्डर कंपेयर टू मिडल ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो जितना ओशन से पास में, उतना विंटर्स में हार्शनेस कम हो जाएगी कोल्डनेस की, और जितना समर में पास में ओशियानिक कोस्टलाइन के, उतना रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी। Is it clear to everyone? Only Pratap is answering. What about others? Is this point clear? Kausar, Nagma, Ritisha, Nandita, clear है सबको? सीमा? Yes, sir. चलिए ठीक है, आगे लिखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। In the southern hemisphere, in the southern hemisphere, comma, in the southern hemisphere, comma, due to narrowness of the continents, due to narrowness of the continents with latitudes, narrowness of the continents with latitudes, comma, increased oceanic influence, increased oceanic influence increased oceanic influence does not allow the winters to be, does not allow the winters to be at sub-zero temperatures, at sub-zero temperatures, sub-zero temperatures, at sub-zero temperatures. Full stop. Full stop. They remain, they remain mildly cold, they remain mildly cold at 5 degrees centigrade to 10 degrees centigrade on an average. To 10 degrees centigrade on an average.
to 10 degrees centigrade on an average. Full stop. The summers remain warmer. The summers remain warmer at 20 to 25 degrees centigrade at 20 to 25 degrees centigrade, comma. The annual range of temperature, the annual range of temperature is lesser in the temperate grasslands of southern hemisphere. In the temperate grasslands of southern hemisphere, temperate grasslands of southern hemisphere, at about 15 to 20 degrees centigrade, at about 15 to 20 degrees centigrade, which is nearly half, which is nearly half of the annual range, which is nearly half of the annual range in these grasslands in the northern hemisphere. Of the annual range in the northern hemisphere. Full stop. The narrowness of the continents in the southern hemisphere, the narrowness of the continents in the southern hemisphere in the southern hemisphere increases annual rainfall increases annual rainfall comma 50 to 60 centimeters is the annual average in the northern hemisphere. 50 to 60 centimeters is the annual average in the northern hemisphere, whereas 75 to 80 centimeters is the annual average in the southern hemisphere.
अब देखिए जो हमारी टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के, वहां का हमने भी क्लाइमेटिक कंडीशन देखा. We have high annual range of temperature, right? Now, these grasslands are suitable for wheat cultivation. किसके लिए suitable है? Wheat cultivation. ये जो wheat होता है इसका जो requirement है that is 20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर. नंबर 2, even 50 सेंटीमीटर्स टू 75 सेंटीमीटर्स के रेनफॉल एरियाज में ये ग्रो करते हैं. वीट कल्टीवेशन हो जाता है. सो इट इज वन क्रॉप विच रिक्वायर्स lesser moisture in the soil, lesser moisture in the soil, plus mild टेम्परेचर. मतलब बहुत ज्यादा गर्मी में वीट ग्रो नहीं कर पाता. इसलिए इंडिया में भी वीट को उगाते हैं विंटर सीजन में. सीड्स को सो करते हैं विंटर सीजन में. नवंबर में सीड को हम सो करते हैं इंडिया में और बाय अप्रैल हम इसका हार्वेस्ट कर लेते हैं, राइट? तो 4 से 5 महीने का ग्रोइंग सीजन होता है. तो विंटर क्रॉप है ये. इसका जर्मिनेशन और इसका जो ग्रोथ है वो माइल्ड टेम्परेचर्स में मैक्सिमम होता है. मार्च और अप्रैल में जब वीट को हम हार्वेस्ट करने वाले होते हैं तो उस टाइम पे मिनिमल हीट चाहिए होती है क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ठंड चली जाती है, गर्मी आने वाली होती है. द कोल्ड conditions do not exist anymore in March and April as compared to December and January. तो वो जो मार्च और अप्रैल की हीट होती है वो वीट के ग्रेन्स को सुखाने में हेल्प करती है. इट हेल्प्स इन द ड्राइंग ऑफ द वीट ग्रेन्स, राइट? लेकिन जब भी वीट की ग्रोथ होती है तो उस टाइम पे ना तो इसको रेनफॉल ज्यादा की जरूरत है और ना ही इसको ज्यादा टेम्परेचर्स की जरूरत है, राइट? तो इसलिए जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के, कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा, रशिया, यूक्रेन, हंगरी, they have become the centers of highest wheat production in the world. They have become centers of highest wheat production in the world. वर्ल्ड का नंबर 1 प्रोड्यूसर रशिया. इवन ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूसेस लॉट ऑफ व्हीट. ऑस्ट्रेलिया, लेकिन इट्स एन एक्सेप्शन इन सदर्न हेमिस्फीयर. ऑस्ट्रेलिया में व्हीट काफी है. वर्ल्ड में टॉप 5 रैंक करता है, लेकिन जो टॉप 4 रैंक करते हैं वो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के. यूएसए, कनाडा, रशिया, यूक्रेन, राइट? यूएसए, कनाडा एंड रशिया को अगर हम तीनों को मिला दें तो ये 3/4 ऑफ व्हीट प्रोडक्शन तो वर्ल्ड का यहीं से आता है. अब इसका कारण क्या है? जो मैंने अभी आपको बताया कि माइल्ड विंटर्स आर गुड इनफ फॉर सिग्निफिकेंट व्हीट प्रोडक्शन. इसको रेनफॉल की भी ज्यादा जरूरत नहीं है. लेकिन जब हम बात करते हैं सदर्न हेमिस्फीयर की, तो सदर्न हेमिस्फीयर में इंस्टेड ऑफ व्हीट कल्टीवेशन व्हाट आर वी लुकिंग एट? सदर्न हेमिस्फीयर के जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं दे आर सुटेबल फॉर maize cultivation. They are suitable for maize.
मेज का क्या करते हैं? व्हाट इज मेज? इट इज ऑल्सो कॉल्ड कॉर्न। यहां पे मेज कल्टीवेशन बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए ये जो मेज है, बेसिकली मेज रिक्वायर्स हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो है यहां पे थोड़ा सा हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए होता है इसको। मेज ऑल्सो रिक्वायर बिकॉज यहाँ पे थोड़ी बारिश ज्यादा है, सो वेल ड्रेन्ड सॉइल्स एकदम सूखा नहीं होना चाहिए, वरना मेज ग्रो नहीं कर पाता है। एंड मेज के लिए above zero temperatures are idle, temperatures are idle, ये परफेक्ट है। यहाँ पे अगर विंटर्स होंगे, हार्श विंटर्स होंगे, सब जीरो विंटर्स होंगे, तो यहाँ पे मेज ग्रो नहीं कर पाएगा। क्या यूज है मेज का? अर्जेंटीना जहां पे पैम्पास ग्रासलैंड्स हैं वहां पे मेज बहुत उगाया जाता है। साउथ अफ्रीका में जहां पे वेल्ड ग्रासलैंड्स हैं वहां पे मेज बहुत उगाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया में वीट भी उगाते हैं, मेज भी उगाते हैं, दोनों ही चीजें। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें सदर्न हेमिस्फेयर में, व्हेन वी कंबाइन पैम्पास, वेल्ट एंड डाउन्स, what we are talking about is these regions are dominant in maize cultivation, not wheat cultivation. बताओ मुझे क्या करते हैं मेज का? वीट तो ह्यूमंस कंज्यूम करते हैं, मेज को कौन कंज्यूम करता है? मेज इज कंज्यूम्ड बाय कैटल। कैटल कैटल में आ गया काउस, बफेलोस, पिग्स, गोट्स। और क्यों इनको मेज इतना ज्यादा खिलाया जाता है? You know, in these regions of Argentina, South Africa, even Australia, मेज को हार्वेस्ट नहीं करते, उसकी फील्ड में एनिमल्स को छोड़ देते हैं खुला, ताकि वो मेज पे अपने आप फीड कर सके। मेज से क्या होता है कि एनिमल फैटनिंग होती है। व्हाट? मेज के खाने से एनिमल मोटे हो जाते हैं, दे गेट फैटेंड, एंड इट इज वेरी गुड फॉर an industry which is very well developed in the southern hemisphere, and this industry is called, इसका नाम है animal ranching. What is the name? Animal ranching. Ranching का क्या मतलब होता है? Slaughtering of animals, cows, buffaloes, goats, pigs, slaughtering of animals for meat consumption. इसी इंडस्ट्री को बोलते हैं एनिमल रैंचिंग। इनफैक्ट अर्जेंटीना जहां पे पैम्पास ग्रासलैंड्स हैं साउथ अमेरिका में, इट इज द वर्ल्ड्स नंबर 1 प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ बीफ। सबसे ज्यादा हाई क्वालिटी बीफ भी और सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बीफ भी आपको अर्जेंटीना का मिलेगा वर्ल्ड। Argentinian beef is top class. Even South Africa is famous for pork export. South Africa is famous for mutton export. It is famous for जो sheep का meat होता है उसका भी export. And Australia, in fact, it is known for sheep and mutton along with beef. तो ये एनिमल रैंचिंग इंडस्ट्री जो है इसने सबसे ज्यादा डेवलप किया है इन द टेम्परेट ग्रासलैंड्स ऑफ सदर्न हेमिस्फेयर, जहां पे वीट को प्रायोरिटी ना देके मेज को प्रायोरिटी देते हैं, बिकॉज द एंटायर लाइफ स्टॉक इकोनॉमी, ये जो लाइफ स्टॉक इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं, लाइफ स्टॉक इकोनॉमी कौन सी होती है? जो इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन लाइफ स्टॉक, मतलब लाइव एनिमल्स, राइट? लाइव स्टॉक, दो वर्ड में अगर हम इसको डिवाइड करें, लाइव स्टॉक, राइट? स्टॉक विच इज अलाइव। Livestock economy is dependent on slaughtering of animals for meat consumption,
and this industry as a whole is called animal ranching. तो क्लाइमेटिक कंडीशंस आइडल हैं वीट के लिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, क्लाइमेटिक कंडीशंस आइडल हैं मेज के लिए सदर्न हेमिस्फेयर में। जिस हिसाब से क्लाइमेट है, वेदर कंडीशंस हैं, उसने शेप किया एग्रीकल्चरल एक्टिविटी को, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ठीक है, कमिंग बैक टू दिस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, जो टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जैसा हमने बताया कि दे आर नोन फॉर एक्सटेंसिव, नोन फॉर वीट कल्टीवेशन। अब ये जो प्रैक्टिस फॉलो करते हैं उसका नाम है एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। क्या नाम है? एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। हैव यू हर्ड अबाउट दिस एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड? सुना है इसके बारे में? एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड में क्या होता है कि वी हैव large land parcels और उन्हीं large land parcels में instead of using high number of labor force, machines are used। ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं मैकेनाइज्ड। और एक्सटेंसिव क्यों बोलते हैं? क्योंकि इट इज ऑन लार्ज लैंड पार्सल्स, लेबर फोर्स कम होगा, मशीन ज्यादा होंगी, लार्ज लैंड पार्सल। और एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड का जो मोटिव होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, इट इज टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, it is to maximize production and not productivity. It is to maximize production and not productivity. Production is absolute, in absolute number, कितना grains हम produce कर रहे हैं एक field से। Productivity is of two types basically. One is production per unit area, other is production per unit labor, जिसको हम production per capita भी बोलते हैं। ठीक है, तो productivity में हम यहां जिसका reference दे रहे हैं, जो हमने not productivity लिखा है, we essentially are giving reference to production per unit area। उससे ज्यादा मतलब नहीं होता, लेकिन production maximum होना चाहिए, हमें उससे मतलब है। उसका कारण क्या है कि यूएसए, कनाडा, रशिया जैसे कंट्रीज में जो ज्योग्राफिकली वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज हैं, वहां पे लैंड पार्सल्स की कमी नहीं है। वहां पे टेम्परेट ग्रासलैंड जो मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट में है, दे आर ह्यूज। इनफैक्ट ऑन एन एवरेज इन यूएसए, कनाडा एंड रशिया, अ फार्मर ओन्स 2000 to 3000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। इंडिया में 2-3 हेक्टेयर ओन कर लें तो उनको ही लोग मानने लगते रहे बहुत बहुत अच्छा है इनका, तो बढ़िया है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट यूएसए, कनाडा, रशिया, ऑन एन एवरेज 2000 से 3000 हेक्टेयर, फ्रॉम 2000 to 3000 हेक्टेयर इज वेरी कॉमन ओनरशिप बाय द फार्मर्स। दे कैन नॉट give interest or they cannot be interested in production per unit area. That will be a very small thing for them. What they are interested in कि जो 2000 to 3000 हेक्टेयर का लैंड है, इससे वो एक सीजन में, एक ग्रोइंग सीजन में प्रोडक्शन को कैसे मैक्सिमाइज करें, वो इंपॉर्टेंट है इनके लिए। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी पे इतना नहीं है, लेकिन अगर हम प्रोडक्टिविटी का
दूसरा वाला एंगल देखते हैं, प्रोडक्शन पर यूनिट लेबर या प्रोडक्शन पर कैपिटा जिसको बोलते हैं। तो प्रोडक्शन पर कैपिटा यहां पे ज्यादा होता है। उसका क्या कारण है? उसका कारण यह है कि यहां पे जो लेबर फोर्स डिप्लॉयड है, जो ह्यूमन लेबर फोर्स डिप्लॉयड है, उसका जरूरत कम है और जो मशीन्स हैं उसकी जरूरत ज्यादा है। तो यहाँ पे कम लेबर फोर्स के साथ ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो अगर कम लेबर फोर्स के साथ ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्रोडक्शन पर यूनिट लेबर कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, सॉरी। 10 लेबर मिलके अगर एक एक्स टन्स ऑफ वीट प्रोड्यूस करते हैं और वही एक्स टन्स ऑफ वीट अगर 100 लेबर्स करते हैं, तो जो 100 लेबर्स को डिप्लॉय कर रहा है और एक्स टन्स प्रोड्यूस कर रहा है, उसका प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्शन पर कैपिटा विल बी लेसर। और जो सिर्फ 10 लेबर के साथ वही एक्स टन्स प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसका प्रोडक्शन पर कैपिटा विल बी हायर। तो ये जो एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती है, इसमें फार्मर का और लार्जली गवर्नमेंट का भी ऑब्जेक्टिव होता है कि इन लैंड से जितना ज्यादा से ज्यादा वीट कल्टीवेशन करें, जिसको हम बोल रहे हैं मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्शन एंड नॉट प्रोडक्टिविटी। ये यूएसए, कनाडा, रशिया में ये सिनेरियो। तो लार्ज लैंड पार्सल्स, मशीन्स आर यूज्ड मोर देन ह्यूमंस। अब यहां पे जो हमारी टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के, द बेसिक प्रायोरिटी ऑफ द फार्मर्स is to maximize production, and in these temperate grasslands 2 types of wheat cultivation is done. One is called winter wheat and other variety is called spring wheat. एक होता है विंटर व्हीट, एक होता है स्प्रिंग व्हीट। अब विंटर व्हीट कौन सा वाला होता है? विंटर व्हीट वो होता है जिसको नवंबर में सो करते हैं और अप्रैल तक हम क्या कर लेते हैं, हार्वेस्ट। 4 से 5 महीने का टाइम देते हैं बिफोर हार्वेस्टिंग। सो दिस काइंड ऑफ व्हीट, जिसको मेच्योरिटी में ज्यादा टाइम मिलता है, दिस काइंड ऑफ व्हीट ग्रेन इज हार्डर, इट इज लार्जर, इसकी ग्रोथ ज्यादा होती है, एंड इट हैज लेस मॉइस्चर कंटेंट, इसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होता है। हार्डर क्यों? क्योंकि मार्च और अप्रैल की गर्मी में ग्रेन से मॉइस्चर इवेपोरेट हो जाता है, और लार्जर इसलिए क्योंकि इसको 4 से 5 महीने मिलते हैं, ये ग्रो करता है अच्छे से, और क्योंकि मॉइस्चर कंटेंट इवेपोरेट हो जाता है बिकॉज वी गिव इनफ टाइम फॉर इट्स मेच्योरिटी, it is more drier. So lesser moisture content means it is drier. But उसी के कंपैरिजन में अगर हम स्प्रिंग व्हीट की बात करें तो स्प्रिंग व्हीट क्या होता है? स्प्रिंग व्हीट इज सॉफ्टर, ग्रेन साइज इज स्मॉलर ग्रेन साइज, एंड इसका जो मॉइस्चर कंटेंट होता है दैट इज हाई। ये कौन सा वाला व्हीट होता है? जिसको आइस या स्नो के मेल्ट होने के बाद सो करते हैं। क्योंकि अब देखिए कहां पे आपको मिलेगा, विंटर व्हीट मिलेगा हाई लैटिट्यूड्स में, पर्टिकुलरली 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री नॉर्थ एंड अबव, अप टू 50 डिग्री नॉर्थ। लेकिन 35 से 40 वाला जो बेल्ट है, जिसमें इतना ज्यादा आइस का जमा नहीं होता, बिकॉज दीज आर लो लैटिट्यूड्स, यहां पे अगर स्नोफॉल भी होगा तो दिसंबर जैन में थोड़ा बहुत होगा और फिर जल्दी से आइस मेल्ट हो जाती है।
लेकिन जो हाई लैटिट्यूड रीजन्स हैं, क्योंकि हमने देखा कि यूएसए और कनाडा जहां पे प्रेरीज हैं, तो यूएसए में will find lower latitude regions because USA is latitudinally south of Canada. Canada is latitudinally higher than USA. तो कनाडा में ऐसे बहुत सारे रीजन्स हैं जहां पे 3-4 महीने स्नो कवर्ड रहता है लैंड, वहां पे विंटर व्हीट नहीं उगा सकते क्योंकि बहुत ज्यादा ही ठंडा है। इतना ज्यादा ठंडा है कि पूरा का पूरा जमीन स्नो से कवर्ड रहता है। लेकिन स्प्रिंग व्हीट हम वहां पे उगा सकते हैं हाई लैटिट्यूड्स में, जब वहां पे स्नो मेल्ट हो जाता है। तो स्नो मेल्ट होने के बाद हम उसको सो करते हैं फरवरी मार्च में, और मई जून में 2-3 महीने के अंदर वी हार्वेस्ट द व्हीट। इसको स्प्रिंग व्हीट इसलिए नाम रखा है क्योंकि स्प्रिंग में सो करते हैं मार्च में। फरवरी तक आइस मेल्ट हो जाती है, मार्च में सो करते हैं और मई जून तक इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। 2-3 महीना मिलता है इसको। विंटर व्हीट का नाम विंटर व्हीट क्यों है? क्योंकि इसको नवंबर एंड, जब विंटर्स ऑनसेट होते हैं, तब इसको सो किया जाता है और अप्रैल में इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो विंटर व्हीट इज ग्रोन इन टेम्परेट ग्रासलैंड्स इन लो लैटिट्यूड्स। जब हम लो लैटिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, वी आर एसेंशियली टॉकिंग अबाउट 35 डिग्री नॉर्थ टू 40 डिग्री नॉर्थ। और जब हम हाई लैटिट्यूड्स की बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट 40 से लगभग थोड़ा सा 50 डिग्री नॉर्थ तक, जहां पे स्नो कवर के साथ हाई लैटिट्यूड के साथ क्या होता है, द मोर हायर इज द लैटिट्यूड, द मोर प्रोलॉन्ग्ड एंड मोर द हायर विल बी द ड्यूरेशन ऑफ विंटर्स। तो स्प्रिंग का वेट करते हैं जब तक स्नो मेल्ट हो जाती है, उसके बाद सो करते हैं, 3 महीने में हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो सॉफ्टर, स्मॉलर, हाई मॉइस्चर कंटेंट। अब इनमें से विंटर व्हीट इज मच हायर क्वालिटी कंपेयर टू स्प्रिंग व्हीट। विंटर व्हीट को यूज किया जाता है ब्रेड मेकिंग में। इससे फ्लोर निकालते हैं, FLOUR, जिसको हम आटा बोलते हैं इंडिया में, हिंदी में आटा भी निकालते हैं। ब्रेड मेकिंग के लिए यूज होता है, बिस्किट मेकिंग के लिए यूज होता है। लेकिन जो स्प्रिंग व्हीट है उसको कहां यूज करते हैं? बेकरी इंडस्ट्री में, और इसको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज में, जहां पे इसको बेचा जाता है। और इट्स अ लो क्वालिटी व्हीट। जितना व्हीट सॉफ्ट होगा, स्मॉलर ग्रेन होगा, मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा, उसमें से उतना ही कम फ्लोर कंटेंट निकलता है। तो अंडर डेवलप्ड डेवलपिंग कंट्रीज जैसे अफ्रीका है, यू नो, सूडान हुआ, युगांडा हुआ, कीनिया, तंजानिया, इवन नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज, जो गरीब पुअर कंट्रीज हैं, सोमालिया है, पूरे अफ्रीका में स्प्रिंग व्हीट जाता है रशिया, यूक्रेन, यूएसए, कनाडा से। वहां की बेकरी इंडस्ट्री में, वहां की ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री में। लेकिन जितना भी डेवलप्ड वर्ल्ड है उसमें जो एक्सपोर्ट होता है वो विंटर व्हीट है, जो कि मच लार्जर ग्रेन, हार्डर, हैविंग लेस मॉइस्चर कंटेंट। अब वर्ल्ड में जो पूरा सर्कुलेशन है व्हीट का, उसमें से 75% सर्कुलेशन होता है विंटर व्हीट का। एक्सपोर्ट में सर्कुलेशन की मैं बात कर रहा हूं, विच इज 3/4 ऑफ द टोटल वर्ल्ड्स व्हीट एक्सपोर्ट। और जब हम बात करते हैं स्प्रिंग व्हीट की, तो इट इज ओनली 25%, मीन्स इट इज 1/4। तो ज्यादा एक्सपोर्ट, ज्यादा प्रोडक्शन विंटर व्हीट का है, थोड़ा सा कम प्रोडक्शन जो लो क्वालिटी व्हीट है स्प्रिंग व्हीट उसका है। विंटर व्हीट डोमिनेट करता है। विंटर व्हीट ही जितने भी कंजम्पशन सेंटर्स हैं व्हीट के, वो बेकरी इंडस्ट्री हो, ब्रेड मेकिंग इंडस्ट्री हो, वो फ्लोर मेकिंग इंडस्ट्री हो, वहां पे विंटर व्हीट ही जाता है इन द डेवलप्ड वर्ल्ड। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द एक्सपोर्ट ऑफ व्हीट टू अंडर डेवलप्ड countries, we are talking about spring wheat primarily. क्लियर हुआ यहां तक?
क्लियर हुआ? Yes, sir. विंटर बीट का क्या है? लॉन्गर ग्रोइंग एंड मैच्योरिटी पीरियड। और जो स्प्रिंग व्हीट है, तो कब से कब तक इसको करते हैं? नवंबर से अप्रैल तक। और जो स्प्रिंग व्हीट है, इट हैज शॉर्टर growing and maturity period. We are talking about March to June. इसको भी नोट कर लीजिए. This is basically for 4 to 5 months, and this is basically for 2 to 3 months. Noted? Yes, sir. अच्छा, थोड़ा सा एक और चीज मेरे साथ नोट कर लीजिए. एक्सटेंसिव मैकेनाइज जो अभी हमने देखा है, एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड प्रैक्टिस में हाई प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन पर कैपिटा, प्रोडक्शन पर यूनिट लेबर भी हाई है ना, क्योंकि यहाँ पे मशीन ज्यादा यूज होती है, लेबर फोर्स कम यूज होता है, राइट? नंबर 2. नंबर 3, इट इज लो ऑन प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया. इनको आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि एक्सटेंसिव मैकेनाइज्ड हम इंडिया के केस में भी पढ़ेंगे. और अभी आपने यहां समझ लिया तो आपको पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, नॉर्दर्न राजस्थान में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद व्हीट और राइस की खेती इंक्रीज हुई थी, उसका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था, वो भी समझ में आ जाएगा, राइट? Sir. हाँ बोलो. Yeah, expensive because हम्म. expected to go last time. हाँ हाँ. एरिया बड़ा है ना, लार्ज लैंड पार्सल लिखा ना हमने. यहाँ क्या लिखा ऊपर ग्रीन में? अभी तो लिखा है मैंने 15 मिनट पहले. लार्ज लैंड पार्सल्स मशीन्स आर यूज्ड. एक्सटेंसिव इसलिए बोलते हैं क्योंकि लैंड पार्सल्स बड़े हैं और मशीन्स यूज होती हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं मैकेनाइज्ड. ठीक है? बड़े हैं ना, प्रेरीज, स्टेपीज, ये सब बहुत ह्यूज टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के. तो इसलिए वीट प्रोडक्शन खाली डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए नहीं होता, वीट प्रोडक्शन एक्सपोर्ट के लिए भी होता है, क्योंकि सरप्लस बहुत प्रोड्यूस करते हैं. इसलिए यूएसए, कनाडा, रशिया, दे आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, दे आर द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स इन द वर्ल्ड.
इनसे ज्यादा वीट कहीं भी प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। मैंने ये बोला था कि इनका जो फोकस है, इनका जो, यही मैंने बोला था, इनका जो फोकस है वो प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया को मैक्सिमाइज करने पे नहीं है, इनका फोकस है हाई प्रोडक्शन पे। प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया, जब मैं आपको यूरोप का ब्रिटिश टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ाऊंगा, तो प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया वहां पे मैक्सिमाइज करते हैं जहां पे लैंड पार्सल छोटे होते हैं। तो लैंड पार्सल जहां पे छोटे होते हैं, यूरोपियन कंट्रीज ज्योग्राफिकल एरिया में छोटे हैं, तो जहां पे लैंड पार्सल छोटा है वहां पे आपको पर यूनिट एरिया पे ध्यान देना पड़ेगा टू मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, राइट। तो वहां पे प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया बढ़ जाता है। अब जहां 2-3 हजार हेक्टेयर का लैंड एक कैनेडियन फार्मर के पास है, यूएसए के फार्मर के पास है, रशियन फार्मर के पास, वहीं पे ऑन एन एवरेज यूरोप में जब हम आगे बात करेंगे, उसके पास 50-60 हेक्टेयर का लैंड है, उसके पास कम है, उसके पास बहुत ज्यादा कम है। तो वहां पे, और पॉपुलेशन प्रेशर बहुत ज्यादा है यूरोप में कंपेयर टू यूएसए, कनाडा, रशिया, जिसमें पॉपुलेशन डेंसिटी भी काफी कम है। तो जहां पे पॉपुलेशन प्रेशर ज्यादा होता है, ज्योग्राफिकल एरिया कम होता है, वहां पे फोकस ये रहता है कि जितना भी लैंड पार्सल मेरे पास है उसमें से प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज किया जाए पर यूनिट एरिया, मतलब पर हेक्टेयर पे वो अच्छे से अच्छा फर्टिलाइजर डालेगा, पेस्टिसाइड डालेगा, इंसेक्टिसाइड डालेगा, सब कुछ करेगा। वो यूएसए कनाडा में भी कर रहे हैं, लेकिन the purpose is different. Purpose is to produce surplus so that डोमेस्टिक कंजम्पशन भी हो जाए और उसका एक्सपोर्ट भी हो जाए, ठीक है। यहां पे आप लिख लीजिएगा 3.5 to 4 tons per hectare is the प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया। हमें इसी फिगर से मतलब है आगे भी जाके, 3.5 to 4 tons per hectare। प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया जो मैंने बताया था इज एसेंशियली कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मैंने बोला था दो टाइप की होती है ना, प्रोडक्शन पर यूनिट लेबर भी और प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया। प्रोडक्टिविटी वहां पे मैक्सिमाइज की जाती है जहां पे लैंड पार्सल की कमी होती है, छोटा लैंड पार्सल। प्रोडक्शन वहां पे मैक्सिमाइज किया जाता है जहां पे लैंड पार्सल बड़े होते हैं। हम डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए भी प्रोड्यूस करेंगे, हम एक्सपोर्ट के लिए भी प्रोड्यूस करेंगे। चलिए लिखिए अभी। डाउन, in the tropical grasslands of northern hemisphere, in the tropical grasslands of northern hemisphere, comma, extensive mechanized wheat cultivation is undertaken. Extensive mechanized wheat cultivation is undertaken. Full stop. In the temperate grasslands of prairies and steppes, in the temperate grasslands of prairies and steppes of USA, Canada, Russia and Ukraine, USA, Canada, Russia and Ukraine, comma,
The climatic conditions are suitable for wheat cultivation. The climatic conditions are suitable for wheat cultivation. Suitable for wheat cultivation with 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 lesser rainfall and with lesser rainfall and and mildly warm conditions. Mildly warm condition, especially during especially during March and April, especially during March and April. Mildly warm conditions, especially during March and April, when maturity of wheat grain, when maturity of wheat grain occurs, when majority नहीं लिखना maturity, maturity, maturity of wheat grain occurs. Full stop. In the extensive mechanized agricultural practice, in the extensive mechanized agricultural practice, in the extensive mechanized agricultural practice, comma, in the extensive mechanized agricultural practice, comma, maximizing production is the objective. Maximizing production is the objective for domestic consumption as well as exports of the surplus. For domestic consumption as well as exports of the surplus. Exports of the surplus. Full stop. Since this practice is dependent on use of the machines, since this practice is dependent on use of the machines, dependent on use of the machines, comma, labor force deployed is lesser and therefore
Production per unit labor is higher. Production per unit labor is higher. Production per unit labor is higher. Full stop. However, the objective is not to maximize. However, the objective is not to maximize production per unit area. Production per unit area as there is enough surplus land as there is enough surplus land available in plenty. Enough surplus land available in plenty for production. Next paragraph. Winter wheat and spring wheat are the two types of winter wheat and spring wheat are the two types of wheat grown in these grasslands. In these grasslands. Two types of wheat grown in these grasslands. Full stop. Winter wheat is dominant in the low latitudes. Winter wheat is dominant in the low latitudes of 35° north to 40° north latitude. Of 35° north to 40° north latitude. Full stop. It is sown at the onset of the winters. It is sown, S-O-W-N, at the onset of the winters in November and harvested by April. Harvested by April. Just after these grasslands. Full stop. Just after the spring
just after the spring season, just after the spring season, full stop. Winter wheat grows for, winter wheat grows for 4 to 5 months, grows for 4 to 5 months, and therefore, therefore, the grain is harder, comma, larger, harder, larger, and having less moisture content. It is a superior quality grain. It is a superior quality grain. Superior quality grain. And is largely used for, and is largely used for used for largely used for bread making, comma, फ्लोर मेकिंग, FLOUR, जिसको हम आटा कहते हैं हिंदी में, फ्लोर मेकिंग, एंड हाई क्वालिटी बिस्किट मेकिंग, हाई क्वालिटी बिस्किट मेकिंग, and in the bakery industry, and in the bakery industry, particularly in the developed world, particularly in the developed world. Full stop. Spring wheat is grown in higher latitudes of temperate grasslands. Spring wheat is grown in higher latitudes of temperate grasslands. Latitudes of temperate grasslands. Where snowfall is higher
snowfall is higher and for longer duration and for longer duration during winters. Longer duration during winters. Sir, बोलो. हाँ बोलो बोलो. Spring wheat is grown in high latitudes of temperate grasslands where snowfall is higher and for longer duration during winters. Snowfall is higher and is for longer duration during winters. The farmers wait for the farmers wait for the snow to melt. The farmers wait for the snow to melt wait for the snow to melt and and in the latitudes of in the latitudes of 40-degree north to 50-degree north and in the latitudes of 40-degree north to 50-degree north, comma, the snow melt only occurs by February. The snow melt only occurs by February. Only occurs by only February. Spring wheat is sown in March. Spring wheat is sown in March and and harvested by June. And harvested by June within a growing and maturity period of within a growing and maturity period of 2 to 3 months. Within a growing and maturity period of 2 to 3 months. Therefore, spring wheat has a smaller grain size. Spring wheat has a smaller grain size, comma, is softer and has higher moisture content and has higher
higher moisture content. Full stop. It only accounts for 1/4. It only accounts for 1/4 of the global production from the temperate grasslands. It only accounts for 1/4 of the total production from the temperate grasslands. From the temperate grasslands and is largely exported to underdeveloped countries. Underdeveloped countries. Since it is a low quality wheat. Since it is a low quality wheat. Next paragraph. In the temperate grasslands of southern hemisphere, in the temperate grasslands of southern hemisphere, maize is grown with a higher priority over wheat. Maize is grown with a higher priority over wheat since the climatic conditions are suitable. Since the climatic conditions are suitable for its cultivation. Suitable for its cultivation. Full stop. In comparison to the temperate grasslands of northern hemisphere, northern grasslands of northern hemisphere, comma, the grasslands of southern hemisphere experience higher relative humidity, higher relative humidity, experience higher relative humidity, comma, well-drained soils and well-drained soils and mild winters recording above zero temperatures. Mild winters recording above zero temperatures. Recording above zero temperatures.
animal ranching industry, animal ranching industry is well developed in these grasslands of southern hemisphere, is well developed in these grasslands of southern hemisphere. Animal ranching industry, हाँ बोलो 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 ये रहा, well drained soils and mild winters with above zero temperatures. With animal ranching is well developed where maize is fed, where maize is fed, maize is fed to cattle, pigs, and goats. Comma, once they fatten, once they fatten, 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 once they fatten, comma, they are slaughtered for producing, they are slaughtered for producing different types of meat. They are slaughtered for producing different types of meat. The pampas, comma, veld and downs. The pampas, comma, veld and downs of pampas, comma, veld, VLD and downs of Argentina, South Africa and Australia. Argentina, South Africa and Australia are known for extensive maize cultivation, known for extensive maize cultivation, extensive maize cultivation, and packed meat, packed, PACKED, and packed meat such as beef, pork, lamb, beef, pork, lamb, and mutton, MUTTON, and mutton, exported worldwide, exported worldwide, full stop. Full stop. Instead of arable farming, instead of, spelling is here, arable farming, instead of arable farming, livestock farming,
is more prevalent. Livestock farming is more prevalent in the temperate grasslands of southern hemisphere. In the temperate grasslands of southern hemisphere is more prevalent in the temperate grasslands of southern hemisphere. टेबल फार्मिंग मतलब व्हीट कल्टीवेशन, ये कल्टीवेशन वो, लेकिन यहाँ पे मेज को उगाया जाता है किसके लिए? टू फीड द एनिमल्स, वो मेजर है। एनिमल्स को कुछ और फीड करेंगे तो मेज को भी नहीं उगाएंगे, बट मेज का मेन पर्पस है नॉट ह्यूमन कंजम्पशन, बट to make animals feed on maize, get fattened, and then they are slaughtered. Okay. आगे लिखिए एक और लाइन, since southern hemispheric countries are lesser developed than northern hemispheric countries, since southern hemispheric countries are lesser developed than northern hemispheric countries except Australia, comma, overall southern hemispheric countries except EXCEPT वाला except Australia, comma, overall production levels of agricultural products, overall production levels of agricultural products is lesser, comma, mechanization of agriculture is lesser, overall production of agricultural products is lesser, comma, mechanization of agricultural products is lesser. Full stop. For high production of wheat, only the temperate grasslands of northern hemisphere are known. Only the temperate grasslands of northern hemisphere are known, and hence for high production of wheat only the temperate grasslands of northern hemisphere are known, and hence they are called as, double quotes में लिखेंगे, and hence they are called as granaries of the world, and hence they are called as granaries of the world. ये देखो मैंने लिखा है स्क्रीन पे, स्पेलिंग यहां से लिखे, granaries of the world. Okay, we'll continue tomorrow. Thank you for tonight. Thank you, sir. Thank you. Bye bye.